Okay, so whenever you face error like this, means let me just save it. So when you try to post or something like that, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सिंपली अगर रेड है तो जो क्लिक ओवर हियर टू चेक करना, वो एरर चेक करने के लिए कि क्या एरर है। तो इसका बीन मेंटेन नहीं है। जैसे ही आप बीन मेंटेन करोगे, देन इसको एक चेंज मोड में फिर से सेव कर देना, बाकी कुछ करना नहीं है, तो वो एरर बीन तो हम चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर केयर किया था, उसमें तो बीन बनाया था मैंने। क्या आपने बनाया तो होगा बट मेंटेन नहीं किया होगा। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ। बहुत एरर निकाले, में बहुत यहाँ तक पहुंचा था। हम्म, में इवेंट फिर मटेरियल क्रिएट किया, वो मटेरियल अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया डोमेस्टिक वेंडर के लिए, बीपी के लिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एरर क्या है ऑनलाइन. किरकोळ एरर असेल ना हा, एवढं काय? नाही नाही एवढं नाही आहे. तुझं सांगा ना, WPT मध्ये जाऊन तुम्ही चेक करा. त्यासाठी आधी WPT क्रिएट करावे लागेल. त्याचं क्रिएट नाही, कॉन्फिगरेशन सो पूर्ण नाही, इथं पूर्ण ऑलरेडी आहे, मेंटेन आहे, त्यामुळे तर झालेलं आहे. फक्त त्याचं बिन मेंटेन नाही, त्यामुळे एरर त्याचे. ओके. मी पूर्ण कॉन्फिगरेशन मध्ये WPT कुठं वापरलंच नाही, तरी कसं काय हे ह्याला असाइन झालं automatic? डिटर्मिनेशन WPT डिटर्मिनेशन आपण जे डिस्कस केलेलं, हम्म. 101 का घेतो सिस्टीम, एकदम आधीच्या सेशन मध्ये आपण डिस्कस केलेलं. ओके. पण आता हा 101, ओके, मी जे प्लॅन कॉपी केला आहे त्याला असाइन नाही केले. ठीक आहे, बघतो मी. ओके, समजा ना मला बाकी कोण जॉईन करा ना. थोडंसं वेट करूया अँड देन विल स्टार्ट. चालेल ना, काय problem. आपण ते व्यास घेणार आहे का? ते व्यास हा बोर्ड आज मधला व्यास आपला आहे. येस येस येस. नाही तर गुड्स मुवमेंट बिल तर दाखवते GR24 ला आयटम मध्ये. हे कॉम्बिनेशन मेंटेन करावं लागेल आय थिंक. येस. ते एक एरर निघतच नव्हता, मी ते लिंकेज केलं नव्हतं. नाही का, लोकल EWM ऍड करतो आपण त्या इंटरफेस मध्ये. ओके. हा एरर येतो, वेअर हाऊस इज नॉट डिफाईन, वेअर हाऊस इज नॉट डिफाईन ऍज EWM वेअर हाऊस. नंतर जर मी पूर्ण हा परत ओके. चेक, फक्त एक सेटिंग राहिलं होतं, ते डिस्ट्रीब्युट मॉड्यूल नाही का आपण ते करतो मॉडेल. मग ते केलं, परत EWM लिंकेज केलं, आणि मग ECC च वेअर हाऊस त्याला असाइन केलं. मग तो एरर निघला ओके. परत. मला एक काय विचारायचं होतं, आपण जो इनबाउंड डिलिव्हरी क्रिएट करतो, VL31
त्यावेळेस तिथे जे कन्फर्मेशन राहतं तिथे इनबॉर्न डिलिव्हरी आणि मग ऍडव्हान्स शिपिंग नोटिफिकेशन ASN कुठले सिलेक्ट करतो आपण? इनबॉर्न नेहमी करायचं EWM. सिलेक्ट करतो म्हणजे नाही समजलं मला. तिथं आपण नाही का कन्फर्मेशन मध्ये ASN आहे, परत इनबॉर्न डिलिव्हरी आहे, परत शिपिंग काहीतरी आहे. कुठं म्हणताय, पीओ कॉन्फ्लिक्ट मध्ये का पीओ कुठे? पीओ क्रिएट करताना, सॉरी, पीओ क्रिएट करताना, परचेस ऑर्डर क्रिएट करताना आपण तिथे खाली आपण Okay, ज्यावेळेस so yeah. So they नेक्स्ट actually we need to check with the MM. So MM ची लोक ते create करतात. ते config is related to MM. But इथे so we तिथे मी can just इनबॉर्न select डिलिव्हरी inbound सिलेक्ट करतो. delivery. Yes, yes, हा, पण आपण इनबॉर्न डिलिव्हरी करणार म्हणून मी ते कन्फर्मेशन कंट्रोल इनबॉर्न डिलिव्हरी सिलेक्ट केलं. yes. पीओ क्रिएट झाली म्हणजे माझं इनबॉर्न डिलिव्हरी सगळं कॉन्फिगरेशन तरी करेक्ट झालं. बरोबर Yes, ना सगळ्या yes, गोष्टी? yes, बॉन्ड exactly. Yep. मी ऍक्च्युअली WPT केलं नाही त्यामुळे ते तो एरर आला. आता असं बघून घेईल मी ते सॉल्व. Mm. Okay, okay. 7:30 पॉसिबल होणार नाही का नीट? 7:30 to 8:15 म्हणजे कसं? 7:30. Yes. माझं ऑफिस It- ऍक्च्युली 7, 7:15 पर्यंत असतं, म्हणजे थोडंफार एक्सटेंड होतं. त्यापुढे थोडासा हा, ऍटलिस्ट. बरोबर आहे, जरा फ्रेश होता वगैरे काय. हम्म. आता मी इथे मटेरियल क्रिएट करताना हम्म. म्हणजे ह्याचे सेल्सचे व्ह्यूज मेंटेन नाही केले, परत ते नाही, सो प्रॉब्लेम काही येतो. प्रॉब्लेम नाही. आउटबाउंड करताना प्रॉब्लेम येतो. हा, म्हणून मी ते विचार केला, म्हणजे ते सेल्स म्हणजे आउटबाउंडचे असतील, येस. वेअरहाऊस बाकीचे. आणि वेंडर बीपी मधून मग ते वेंडर क्रिएट करताना ते FLVN0 पहिला कंपनी कोड. Yes, yes. Okay, let's start. So today's topic is value added services. Okay. So process like labeling, polishing, right, are come under the value added services. Okay. So we can trace that activity separately. Okay, in EWM. क्योंकि उसका भी फिर एक वर्क सेंटर होगा, राइट, सेम कॉन्फ़िगरेशन लाइक POSC. ओके, ओनली स्टेप एडिशन होगा, मतलब जो हमने POSC में किया था वही वैस में हमको करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट. ओके, ओनली two things will be added over here. One is packaging specification and then VAS relevance. So VAS relevance means जो VAS की रिलेटेड सेटिंग है वो हमें एक्टिवेट करनी पड़ेगी. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज. और फिर पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन क्यों चाहिए? एनी आइडिया, एक रफ पॅकेजिंग स्पेसिफिकेशन क्यों आपल्याला चाहिए इस केस में? आपण कुठलं पॅकिंग मटेरियल वापरलंय, कुठल्या साईजचं, त्यावर QR कोड असेल, बार कोड असेल. बट इनबाउंड है, राइट? वी आर डूइंग इनबाउंड. करेक्ट. सो इज लाइक, हा. या, सो हमने क्या डिस्कस किया कि दिस विल बी लेट्स से लेबलिंग, पॉलिशिंग, राइट? करेक्ट. सो ये हमें उनको बताना है कैसे करना है, राइट? ओके. सो प्रोसेस ऐसा है कि हमें मटेरियल रखना है बीन में, राइट? ये तो ओके. ओके, इनबाउंड प्रोसेस है, या. सो हमें बीन में रखना है, बट बीन में जाने से पहले कस्टमर, मतलब उनके पास लेट्स से आउटबाउंड में ये मतलब लेबलिंग नहीं कर सकते वो. ओके, डिस्पैच करते वक्त.
right? So we receive the product, right? Then we'll segregate, right? जो वैस में जाएगी, लेट्स से यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह चल रहा है, राइट? फिर उसमें मतलब वो होने के बाद पुट अवे कर देंगे, एंड देन जैसे ही ये हो जाएगा उसको, यू नो, इट विल डिस्पैच एक्शन। हाँ हाँ। डिस्पैच के पहले, मतलब आउटबाउंड नहीं है वो, इनबाउंड है पूरा। So, ये इमेज थोड़ा सा या दिस वन वी कैन से, ओके। क्योंकि मटेरियल तो हमारा इनबाउंड का सप्लायर से आता है, तो ऑलरेडी उस पर उसमें या ऐसे उसके कुछ जो होते हैं ना प्रोडक्ट की, वेंडर तो नॉर्मली देगा, राइट? बट वो हाँ। रखते वक्त हमें वो अलग अलग करना है। सो एक सिंपल एग्जांपल है, एक कंपनी है डिलीवरी करके, राइट? ओके तो डिलीवरी क्या करती है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिए वो मटेरियल आती है चाइना से, पे। ओके तब जब वो मटेरियल जब वो लाएंगे चाइना से, तो वो एक ही बॉक्स में आएगा पूरा, क्योंकि मटेरियल करेक्ट तो हाँ। एक ही है, फॉर एग्जाम्पल। ओके बट हाँ हाँ। जब उन्हें डिस्पैच करना है, तो वो डिस्पैच में उनके पास ज्यादा टाइम है ही नहीं, राइट? तो वो क्या करेंगे, जैसे ही इनबाउंड होगा, एक पैलेट आएगा, फॉर एग्जांपल उसमें मोबाइल है, 100 मोबाइल है, और 100 मोबाइल को लेबलिंग करके, उनके उनके फ्लिपकार्ट का लेबलिंग, अमेजन का लेबलिंग, फॉर एग्जांपल, ओके तो उनको उसको उनको अलग दे अलग देंगे हाँ। पैक करना है। यस, तो जब भी रिसीव होगा तभी हम उसको वो एक्टिविटी करके छोड़ देंगे। सो आउटबाउंड के बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, आउटबाउंड में विल डायरेक्टली पिक एंड डिस्पैच। ओके ओके, ओके दैट्स दी, लाइक यू कैन से दी आइडिया, अदर सिंपल एग्जांपल। समझ में आया। ओके, तो सो इसमें विद ये हम पीओएससी भी कर सकते, विदाउट पीओएससी भी कर सकते। नाउ व्हेन शुड वी गो पीओएससी एंड व्हेन वी शुड नॉट गो विद पीओएससी? एनी रफ आइडिया? अगर वो आपने कहा था ना कुछ अलग अलग डोर पे आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कुछ तो। नहीं, तो सो लेट्स से कि वो एक ही इसमें पैक्ड है पूरा, अलग अलग मटेरियल, राइट? जो ओके वैस है वो भी, और जो वैस नहीं है वो भी, राइट? हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। लेबलिंग और विदाउट लेबलिंग वाली वाले भी। तो सबसे ओके पहले हमें हाँ उनको हाँ। ऑब्वियसली सेग्रीगेट करना पड़ेगा, राइट? उसको हमें ओपन करके देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, राइट? तो वो सेग्रीगेट करने के बाद ही हम उसको मान सकते हैं कि ये वैल्यूडेड सर्विसेज है और विदाउट वैल्यूडेड सर्विसेज है। सो जो वैल्यूडेड सर्विसेज है वो डायरेक्टली जाएगा वैल्यूडेड, मतलब अगले स्टेप के लिए। जो नॉर्मल है वो डायरेक्टली बीन में चला जाएगा फिर वहां से। ओके, हेलो? हाँ यस सर राइट। ओके, सो जो मैंने बताया था वास्ट रिलेवेंस, राइट? सो बेसिकली ये हमें जस्ट एक्टिवेट करना है वैस। सो फॉर दैट विल गो टू दी SPRO, रेफरेंस IMG, okay, same extended warehouse management, extended warehouse management, okay, then cross process setting, okay, value added services, then number range. So we already assign number range, तो ये करने की जरूरत नहीं है। मतलब रेंज नंबर रेंज या का। चेक वो warehouse is 750 और कुछ अलग था। या 75, सो नंबर रेंज तो जस्ट एन नंबर रेंज, राइट? सो वैस की ना एक अलग से ऑर्डर भी बनती है, उसके लिए हमें ये नंबर रेंज चाहिए। नंबर रेंज है इसका मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। यस एग्जैक्टली, राइट। देन गो टू द डिफाइन रिलेवेंस फॉर वैस। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे जैसे हमें वो कौन से डॉक्यूमेंट टाइप, अभी देखिए वैस जब होगा तो वो सबके लिए नहीं होगा, राइट? जस्ट बिजनेस ने बोला कि सब मटेरियल के लिए हमें करना है, राइट? किसी स्पेसिफिक के लिए होना चाहिए। सो मैंने सबसे पहले डिलीट की एंट्री जो कॉपी के साथ क्रिएट हुई थी, देन न्यू एंट्री। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन माई वेयर हाउस आइटम कैटेगरी, सॉरी डॉक्यूमेंट कैटेगरी पीडीओ, तो हम क्रिएट नई न्यू क्रिएट करके भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अभी तो INB है, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, राइट?
तो लेट्स से कि एक और के INB1, राइट, उसी के लिए ट्रिगर होना चाहिए, तो हम वो स्पेसिफिक के लिए हम मेंटेन करेंगे। मतलब इससे होगा क्या कि सेम मटेरियल अगर आया बट उसका डॉक्यूमेंट टाइप INB है, राइट, उसके लिए ट्रिगर नहीं होगा, राइट। जिसका INBI1 है उसी के लिए वो ट्रिगर होगा, राइट। मतलब स्पेसिफिक हम उसको ये कर सकते हैं कि यस इसके लिए क्रिएट होना चाहिए और इसके लिए क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये हम उसमें रख सकते हैं। तो ये आइटम कैटेगरी हमें वो पीओ क्रिएट करते समय उस मटेरियल को अटैच करने मतलब असाइन या करनी ये पड़ेगी मतलब ना। SD वाले, यस, सॉरी MM वाले वो देख लेते हैं, बट यहाँ पे हम उसको एक कोडिंग कर सकते हैं कि कब वो होना चाहिए और कब वो नहीं होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट लेवल के ऊपर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, क्लियर। सो व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टाइप इनबॉर्न में? डॉक्यूमेंट टाइप ये आपका सो INB, राइट। सो आइटम कैटेगरी भी हम रख सकते हैं, बट आइटम कैटेगरी विल मेंटेन ब्लैंक, सो डजंट मैटर। मतलब वो ID LVV की भी काम करेगी, ID PDI कौन सी भी उसके लिए वो काम करेगी, राइट। Then this product group and so there is a product group and group type. So it's just like our जो हमने HU में देखा था, HU type check, सॉरी, HU type और HU type group वैसे ही है। तो ये हम क्रॉस डॉकिंग में देखेंगे, राइट। सो इसमें बिकॉज पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन भी है, तो पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन का हमें कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोसीजर कंडीशन रिकॉर्ड, राइट। सो इसका एक स्टैंडर्ड कंडीशन दैट विल यूज, दैट इज 0 VSI। ओके, ठीक है। तो विल यूज दिस वन, राइट। देन ऑर्डर, सो यहाँ पे वी कैन से कि ऑर्डर कब क्रिएट होनी चाहिए, मैन्युअली क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है। नॉर्मली वी सेटअप एज ऑटोमेटिक। ओके, सो व्हाट विल से कि जैसे ही whenever we receive material, sorry, delivery, as soon as that time it should create, or after good receipt, right, हम दोनों ये मेंटेन कर सकते हो। तो I will say okay as soon as we receive delivery that time, and then if पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये मैंडेटरी है पैक स्पेस। अगर ये नहीं है तो सिस्टम वो ऑर्डर ही नहीं क्रिएट करेगा, हम फिर POC, सॉरी, वैसे उसको कर ही नहीं सकते। तो अगर हमें वो चाहिए देन यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सिस्टम ने वार्निंग देना चाहिए या एरर देना चाहिए। ओके, सो वो हम मेंटेन कर सकते हैं। सो मैं इसको जस्ट यही मेंटेन करता हूँ, डोंट चेक एनीथिंग, देन सेव इट। ओके, क्लियर। देन अगेन POC सेटअप सेम, warehouse task, okay. Then go to the process oriented storage control, right. Then new entry, so 75VS 7500. Okay, and then yeah, important announcement, जो सब क्लास अटेंड करेंगे लास्ट तक, अभी यही मेरे लिए एक ये बचा है, क्या बोल सकते हैं उसको, अशोक, इज दिस यू, राइट? आलोक, हेलो, इज दिस आलोक? असंतोष, सॉरी, संतोष, ओके। You are my best student. Means you both, Sachin and you. Okay. So एक small surprise, जो भी डेली अटेंड क्लास करेंगे, राइट, अभी जितने भी सेशन बचे हैं मोस्टली विल ट्राई टू कंप्लीट नाउ एनी कॉस्ट फेब तक, जिसके उसके लिए मैंने वो मैसेज डाला है दैट विल कनेक्ट ऑन अल्टरनेट डे, एंड देन विल आल्सो सी कि एक एक सेशन हम वीकेंड में भी ले, राइट। विल चेक कि कैसा कर सकते हो वो। बट या सरप्राइज ये, जो भी लास्ट तक डेली क्लास अटेंड करेंगे, राइट, अभी भी टाइम गया नहीं है, जिन जो जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी आ सक, मतलब यस ऑब्वियसली उनके लिए भी है। उनको लास्ट में मैं एक मतलब बहुत कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, कॉन्फ़िग डॉक्यूमेंट, उसमें एंड टू एंड कॉन्फ़िग हर एक प्रोसेस का सेपरेट, और उसका ये भी है प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बट ओनली इफ अगर ज्वाइन किया तो ही। ओके, और जो ऐसा नहीं कि एंड में ही मैं शेयर करूंगा, राइट, मैं लाइक
अभी जो आ रहे स्पेशली नाउ सचिन एंड अशोक, यस मैं आपको, बट ओनली मैं अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू फेस सम एरर, तभी आपको समझ में आएगा, राइट? अगर आप वो कॉन्फ़िग देख देख के लाइक रेफरेंस से आप करोगे तो ऑलरेडी लाइक ऑब्वियसली जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो दैट द रीजन। ठीक है सर। देन वैल्यू एडेड सर्विसेज का एक इंटरनल स्टेप है, विल असाइन दिस, सेव इट, देन वी नीड टू ऐड दिस सीक्वेंस। बाकी कॉन्फ़िग पूरा सेम ही है, ओनली वो वैस रिलेवेंस का हमें और पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन हमें अपडेट कर क्रिएट करना है, वो हम इसके बाद करेंगे। विल गो हियर, so after pt, right, we'll do decons and then this one also, and then at the end 75 pt, okay, and obviously the automatic warehouse task creation, okay, then we'll create the storage type for value added services, okay. So ये जो storage type होगा इस work center ही होगा, right, only name is different, okay. We can give as like a works e only, what I will do, I will this dc, I will just copy this, okay, vas save it, okay. Then what next? If you remember, we need to create work center also, right? We'll directly go to the work center inventory, so 7500, yes, 7500. Now external step, this for vs, right? Storage type vs, then wpt. So what हमने कौन सी wpt यूज की थी, remember, we use 3040, right? Now the layout, so layout में will use vas1, okay. Last time we use pkmx, right? Now we'll use vas. Now why vas? Because when we say value added services, there are different options. So if you go back, if you go to this layout, if you check 7500 and then vas, so here you will see vas relevant tick, right? vas order, right? item, so this must be tick, okay, vas mein, okay. Then what else? We need to create one bean, right, for that work center, okay. So 7500 vas 7500 sample, and then this is vas, right? Save it. Now we also need to maintain the bean, right? Where destination bean, right, in POSC setup, right? Process oriented storage control, okay. So here, okay, हमने icons के लिए किया था, right? DC, right? I will copy. Now external step is 5 vas. WPT will be 3060 only because it's the internal put away movement, right? Right, everyone? And then the work center or the destination will be VS in storage type, and then bean is 7500. Okay, clear? Save this. मैं अभी ड्राइव करूंगा, रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ओके, बस सुनता हूँ। Yeah, sure. Okay, now so हमारा सब config हो गया. Only thing is that we need to create packaging specification, and at the same time हमने जो rule base किया था, right, हमारा decons, उसको भी मैं क्या करता हूँ अभी default कर देता हूँ, right? So staging, क्योंकि हमने वो packaging के ऊपर maintain किया था,
right? I'm not sure कौन सा packaging था. I will just untick this one. It's like fixed one. Okay. Now we need to create the packaging specification. Okay. So for that, /n/SEWM/backspace. /SEWM/backspace. Okay. Create 75. Oh, backspace का हमारा config नहीं है. मतलब ये पूरा created नहीं है. No issue. We'll create manual packaging specification. जैसे हमने देखा था सबसे पहले. So we can use SAP is a standard one. Okay. So we'll maintain this one condition record. So it will be क्योंकि अभी हमने वो जो vast relevance था वहाँ पे हमने maintain किया था 0v_si. Okay. So that's the reason we have to select this one only. Okay. Then the product. So for that, what I will do, I will check WM PRDI. Okay, 647. And then vendor, this one. Okay. Then, okay, ये किसी ने तो maintain करके रखा है, no problem. Target quantity 1. Now here we will have problem. We need to search with 7500. 7500 description. Okay, pack का नहीं है, so okay, let me create the backspace packaging specification group. 7500 7500 standard one that we can use now. Oops, number range on this one. Okay, number range आ गया. Now we have to just add the label. Okay, target quantity 1 can maintain 100. Right, element group we need to create. In that we can maintain the auxiliary material. Right, so 500. Okay, this is now auxiliary material. Okay, work step में फिर हम वो maintain कर सकते हैं कि हमें क्या करना है. Right, let's say now we'll just take a dummy work step. Okay. So, and then this for which products? Okay, so this for 647. Packaging specification is for 647. One pieces. Oh, each. Okay.
Okay, so we'll check. So we'll go to the header and then again we'll maintain the condition 0v_si. Now product vendor. Okay, check. And no level. Level तो है. Okay, yeah, it's not required. Level type. Here we'll maintain this is an auxiliary packaging material. And then we'll activate. Okay, now we'll create an delivery. /o VL31N. Okay, as one. Oh, हमने मेंटेन किया है. ये किसका मटेरियल है? मे बी दिस रन ऑर्डर है. ओके, हमने 61 के लिए हमने क्रिएट किया है. सो वी कैन डिलीट 46. Okay, and then we'll pack this. Five CBs, select pack, right, save it. We'll check this delivery. Okay, now we have maintained the VAS. It should trigger automatically, right? VAS order. So here you can see the VAS order, display order for VAS, right? So this is also the checkpoint कि आपका VAS काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, right? If it's blank, it means we have some issue in the VAS triggering, right? मतलब so VAS trigger के लिए जैसे मैंने बताया पैक स्पेस और VAS relevance mandatory है, right? So packaging specification जो हमने maintain किया है, right? That we can see, and then VAS relevance की वजह से वो trigger हो जाए. And this is a VAS order, right? You can display the packaging specification over here. Okay, now the process, the next process is again the same. We can do the good receipt जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, सेम मॉनिटर से हम चेक कर सकते हैं. सो WM मॉनिटर, non delivery document, non delivery. Okay, so we can create task from here, create warehouse task. Okay, you can see the task, right? Waiting warehouse task. So one is unloading, right? So we'll confirm the unloading task. As soon as unloading is confirmed, first is task is created now, unloading to work center. So we'll also confirm this task, right? But still is in waiting means there is some activity in work center, right? /n/SEWM/decons. Okay, then यहाँ पे WC10, right? And then where we have discussed we can do the activity, or what is the delay, 2046. Okay, so we'll go back and I will
enter the request number 46, so we can only see our particular delivery, right? Then I will directly say HU step complete. Okay, because I'm okay with the whatever the quantity, right? If we have different material, then yes, we'll create different boxes, right? with जो हमने दूसरे बॉक्स में पैक किया, let's say 68, तो वो डायरेक्ट पुट अवे हो जाएगा, और 67 it will move to the VAS work center. Okay, now go to the monitor again. Okay, we'll refresh. So now see, VAS से वर्क सेंटर का एक्टिविटी ट्रिगर हुआ है, राइट? वर्क सेंटर, sorry, work center to VAS, right? So we'll confirm this one. Okay, right? But here again you can see VAS जो बना है, लास्ट वाला जो टास्क क्रिएट हुआ है, VAS वर्क सेंटर टू फाइनल बिल, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल इज इन वेटिंग वेयरहाउस टास्क बी. दैट मीन्स वी कैनॉट कंफर्म, मीन्स अगेन जैसे क्योंकि हमने वर्क सेंटर क्रिएट किया है, देन वी नीड टू गो टू दी VAS वर्क सेंटर. सो VAS वर्क सेंटर का जो ट्रांजैक्शन है is altogether different. Okay, go to the work scheduling, validated service, sorry, not this one, execution. This is the create confirmation for VAS. Okay, VAS EXEC, this is the transaction. Okay, now here we can search with the VAS order, or we can search with the request number, delivery number also. Then in the VAS there are different status. There are basically 4 status: not started, in process, completed with quantity deviation, without quantity deviation. Now the status is A to blank, right? So if I select A to B, then I can only see which is in A to B. If I select D, for example, okay, D to D, okay, or we'll say C to D, okay, C to D. And if I check, so see, sorry, VAS work center, it's this one. Okay, so I'm not getting any result because हमारा status क्या है फिलहाल A, right? So if you select A to B, जैसे ही B उसका मतलब status change हो जाएगा, तो सिस्टम हमें वो दिखाएगा नहीं, right? So that's the reason what we'll do, we'll go with the status A to D, मतलब जो कुछ है A to D के बीच में हमें सब दिखेगा. Even when we confirm the task, right, अंदर जाके फिर भी हम उसी स्क्रीन में रहेंगे. अगर हमने A to B कर दिया, जैसे हम टास्क कंफर्म कर देंगे, तो इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, तो स्ट्रीम हमें बाहर फेंक देगा. Okay, okay, still it's showing. That's strange. Okay, why? देखिए A उसका स्टेटस है input permitted specific selection if I remove, but yeah, इसका तो कुछ, okay, it's really strange. Yes, we have missed some setting. हमने backspace मेंटेन किया. इसमें वर्क सेंटर जैसा भी नहीं है कि जिसमें हमें ये मेंटेन करना है. Okay, VAS storage type VAS.
Z02. Maybe VASA is also fine then. Final step this is just in section, there is nothing to do in that. Also there is nothing to layout also. Let's check once. So VAS relevant सब ठीक है. Yeah, everything is there. Even ये भी है. Okay, VAS का B is fine. 7.5 change the data save दिखा रहा है. This is strange. VAS की ऑर्डर भी बनी है, वर्क सेंटर पे दिखा रहा है. लेआउट में तो कुछ चेंजेस है नहीं. यूएसए में मेंटेन किया है. उसका जैसे हमने इसका मेंटेन किया था वैसे भी नहीं है वर्क सेंटर जैसे, जहाँ पे हमें मेंटेन करना है. टास्क ऑलरेडी बना हुआ है, सो इट्स फाइन. क्लास एंट्री क्यों नहीं दिखा रहा है? सब कुछ तो है. 647 भी है, उसकी वजह से पैक स्पेस ट्रिगर हुआ है. वैसे ट्रिगर नहीं हो रहा है, वैसे का वर्क सेंटर ओपन नहीं हो रहा है. इससे मैं तो छेड़खानी की है. बट या वैस ऑर्डर अगर इशू होता तो वैस ऑर्डर नहीं बननी चाहिए थी. वैस ऑर्डर तो बन रही है.
create new one. Okay, so maybe here let's check. Okay, you check with both without POSC and with PHC. मैंने डायरेक्ट with POSC किया है, right? Check without POSC, which is simple version. And then it will move to the work center. Okay, then work center में icons. Directly confirm. Then create for the VAS movement, work center to VAS. Okay, location. Okay, now we'll try VAS. It will be blank. Oh, center is VAS. Okay, I'm able to find order matching this selection. Okay, why? This. This is really strange. Let me check. VAS. Hmm, okay. बट ये अगर नहीं रहता तो वो पैक स्पेस ही क्रिएट नहीं कर पाता था, बट उसने तो पैक स्पेस क्रिएट किया है, सो इट्स फाइन. वर्क सेंटर क्यों नहीं दिखा रहा है? चेक क्या इशू है. ओके, आई विल चेक and then maybe need to do the configuration again. Hello, hello, am I audible? Hello, can you hear me? हाँ सर. Yeah, let me check. I don't know कि क्यों नहीं काम कर रहा है. एरर आ रहा है सर. या कॉन्फ़िग तो सब बराबर है, और सो मेरे पास भी आंसर नहीं है. लेट मी चेक कि क्यों नहीं काम कर रहा है. ओके सर. एंड आई विल अपडेट फॉर वीकेंड. ओके, कैसे हम करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग चल जाएगा ना सबको. ठीक है. At what time sir? हाँ, हेलो.
Okay, I will update. I will check this issue also. Okay, sir. Yeah, please practice and then yeah, अगर कुछ issue आता है let me know. Okay, we'll try to. I will Okay, try sir. to resolve it in soon possible. And जो भी recording देख रहे, please join. So we'll discuss more. Different topic. Okay, thank you for joining. I hope you enjoy this session. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, thank you. Okay, sir. Good night. Good night.